Hello everyone, my name is Neelam Mehra and today we are doing MCQs of the 7th chapter of NCERT, Coordinate Geometry, right? We'll be doing the quick summary of the chapter followed, unlike many other chapters we have, this is the most simplest of all. Why? Because it has only two formula, right? It has only two formulas which you have to know, you have to understand, and then practice to apply them. If you know how to apply the question, only two formulas, you'll be able to handle all the MCQs of coordinate geometry, right? And let's see what are those formulas, let's see those concepts, and then we'll start with our MCQs. And this MCQs of coordinate geometry, I must tell you, it carries 6 marks out of the total paper of 40 marks, right? 6 out of 40, that means 15% marks you can grab easily by understanding these two formula and practicing MCQs with me of coordinate geometry. You just need to give me one day and you'll have 6 marks right under in your pocket, right? So let's begin with the summary of the chapter. So in the summary we have two formula, distance formula and section formula. These are the only two formula. We had another formula, area of triangle, but that has been deleted by CBSE for your term 1 board exam, so it won't come, right? So we are left with only two formula. And before we start with our distance formula, let me just quickly refresh about the point system, which you already know. I know we've done it real number and polynomial also, but I'll just quickly refresh it that any point P, say xy, can be plotted on my number system, right? Where this is my origin 0, 0, this is my x-axis, horizontal line is x-axis, vertical line is y-axis, and it goes on and on. These are infinite lines with no ends, right? And on these axis we have positive, for x-axis we have positive integers on my right, 1, 2, 3, 4, 5 and so on so forth, -1, -2, -3, -4, -5, and it goes on. Same way for y-axis, the negatives are below the x-axis, -1, -2, -3, -4 and 1, 2, 3, 4, right? Now for any point to be plotted on this, we need to see distance on our x and y axis. Say pxy is p34, right? So here, first of all, this is called x coordinate and we have another name for it. This is my x coordinate and we have another name for it which is called abscissa, right? Same way, this is my y coordinate and another name is ordinate, right? This is my abscissa, this is my ordinate or x-axis, x coordinate or y coordinate also you can call them. Now if I'm plotting my any point, say 3, 4 on my number system, that means 3 I'll take here and 4 I'll take here. So 3 and 4, if we'll make the lines meet, this is my point 3, 4, which you're already aware of. You know how to plot a point, right? What I want to emphasize here is what is related to coordinate geometry here. The question that might come related to this is you need to tell the distance of this point from x-axis or from y-axis or from any other point. For defining the distance of this point from any other point, we have distance formula. But for finding this its distance from x-axis and y-axis, you just have to look at your points. You just have to look at your x coordinates and y coordinates and you can tell straight away. That means distance of P34 from
x-axis and from y-axis is, see, you can see distance of this point from x-axis is this much, and this is what? Parallel to this, and this was 4. So you can see this is 4, so this is also 4. So distance of P from x-axis is 4, and same way distance of P from y-axis is this much, which is 3. And if you see it carefully, x-axis distance जो 4 आया है, which is nothing but my y coordinate or my ordinate, right? My y coordinate, and 3 is my x coordinate. Right? My abscissa. So समझ में आ गया? जब भी आपसे पूछेंगे इस टाइप के MCQ आएंगे, टेल द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आप बोलेंगे एक्स एक्सिस का डिस्टेंस जो होगा वो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा. ऑपोजिट है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस एक्स कोऑर्डिनेट नहीं होगा, वाई कोऑर्डिनेट होगा. और वाई डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी इट्स एक्स कोऑर्डिनेट. तो आप सीधा एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे क्या है 3. सो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज 3 एंड डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस इज स्ट्रेट अवे 4. राइट, आप देख सकते हैं. फॉर्मूला 1 which says that you have to find out if distance between any 2 points, that means say any 2 points are given are on my number line, right, on my number system, like P is 3, 4 as I said, or some other point, say Q here with -4 and 2, -4 and 2, and you have to find out the distance between PQ, straight distance, right? Or there's a point A here, there's a point B here, and you have to find out distance between B. Same way, any 2 points on the number line, number system, anywhere or in any of the quadrants, then you have to use the formula, our distance formula, which says if P is x1, y1, any one point, and Q is another point x2, y2, right? This is a line on my plotted on my system, number system. Then the distance PQ, this distance PQ will be this formula, which will start this x2 minus x1 will take x coordinate of Q minus x coordinate of P, will whole square it, plus y2 minus y1 whole square. This is my distance of the 2 points, right? कोई भी पॉइंट्स दिए हो, आप एक का एक्स कोऑर्डिनेट लीजिए माइनस दूसरे का होल स्क्वायर कर दीजिए, एक का लीजिए वाई कोऑर्डिनेट, दूसरे का लीजिए माइनस करके होल स्क्वायर करके, पूरे का अंडर रूट निकाल लेंगे, आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगा यूनिट्स में, राइट? फाइन, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मूला. देन वी हैव अ सब फॉर्मूला विच वी रिमेंबर. If we remember it, it's fine. If we don't, not an issue, because it's not the main formula. This is the formula we have derived from our distance formula only, right? तो basically वो कहता है कि अगर P ना हो, origin हो 0, 0, this point. So किसी भी Q point का जिसका coordinate x, y है, origin से क्या distance होगा, right? So हम सीधा आते तो हम फटाफट ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट? पर अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है, पर फर्स्ट डिस्टेंस फॉर्मूला ज़रूर आना चाहिए, वो भूलने से काम नहीं चलेगा. और ओरिजिन वाला नहीं आता है, नॉट एन इशू. एज आई सेड, देयर ओनली 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर, फर्स्ट एंड सेकेंड. 1A एंड 1B आर ओके इफ़ यू नो इट. ध्यान रहा, ठीक है? वैसे तो कर लीजिए, कोई देर नहीं है. फॉर्मूला है, आपको ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है Q का, x2 माइनस x1. तो x2 इज़ यहाँ पे
x है और x1 आपका ओरिजिन है, 0 है, क्योंकि ओरिजिन के पॉइंट 0 0 होते हैं, प्लस y minus 0 square, which is x is my first formula, distance formula, distance from origin, x square plus y square, and we have this distance of any point from x-axis and y-axis is, distance from x-axis is its y coordinate, and distance from y-axis is its x coordinate. Distance from y-axis, distance from x-axis, right? Now let's see what is the section formula, second formula all about. Now our second formula is our section formula. Basically it is saying that if there's a line with A and B as its endpoints, right? A and B we have x1, y1, and B is x2, y2, and there's a point P with xy coordinates, and this P, since we can see it is dividing AB into two sections, right? And if the distance of AP and PB is in the ratio of m1 is to m2, right? Say like it is 10, suppose AB is 10, AP is 2, P is dividing AB into 2 and 8 part sections with 2 unit and 8 unit distance. Then m1 m2 obviously will be 2 is to 8 will be 1 is to 4, so m1 will be 1, m2 will be 4, right? Same way any ratio can be there. So ये सेक्शन फॉर्मूला बेसिकली बताता है कोई लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट दिए है, बी के कोऑर्डिनेट दिए है, आपको उस पी के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो कि ए बी को इंटरनली m1 और m2 रेशो में डिवाइड कर रहा है, राइट? सो ठीक है, हम निकाल लेंगे, हमें पी के जो दो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई वो सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू मिल रहा है. जस्ट रिमेंबर द सेक्शन फॉर्मूला विच सेज कि एक्स विल बी, हमें रेशियोज दिए होंगे, हमें दोनों कोऑर्डिनेट दिए होंगे, इन चारों को यूज़ करके विल फाइंड आउट एक्स एंड वाई. सो एक्स विल बी, हम यहाँ से शुरू करेंगे m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू x1, 1 and denominator will be m1 plus m2, right? स्टैंडर्ड, कोई दिक्कत नहीं है. m1 x2 m2 x1, फाइन. x1 x2 हमें दिए होंगे एंड पॉइंट्स और नीचे m1 प्लस m2. सेम वे y का सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है, y कैसे निकलेगा? सेम वे m1, अब की बार क्योंकि y निकाल रहे तो x2 की जगह y2 ले लेंगे. m1 y2 प्लस m2 y1, m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2. क्लियर है? नो कन्फ्यूजन. हमें एक्स वाई कैसे निकलेगा? m1 यहाँ का कोऑर्डिनेट, अगर x निकाल रहा है तो x, m2 दूसरा x, नीचे m1 m2. y में नीचे m1 m2 पहले लिख लेना, ऊपर m1 y का इधर वाला m2 y1. ठीक है. सो दिस इज माय सेक्शन फॉर्मूला विच विल गिव मी द कोऑर्डिनेट फॉर दिस. अब MCQ में क्या होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इनडायरेक्ट भी आ सकता है. x, किसी में आपको ये सब दे देंगे x निकालना हो, किसी में हो सकता है x दे दिया m1 निकालना है, एक रेशो दे दिया है m2 दे दिया m1 निकालना है, या m1 अपॉन m2 भी निकालना हो सकता है. विल गेट टू नो एज विल स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चंस, राइट? पर फॉर्मूला ये यूज़ होगा, इसी को यहाँ वहाँ किसी ट्रिकी सिचुएशन में डाल के यू हैव टू फाइंड आउट एनी वन अननोन नंबर, अननोन वेरिएबल आउट ऑफ दिस. हो सकता है x1 ना दिया हो, x2 दिया हो, x दिया हो, ये कोऑर्डिनेट दिया हो, इसका x कोऑर्डिनेट दिया हो, इसका x कोऑर्डिनेट दिया हो, ये x कोऑर्डिनेट निकालना हो. सो विल पुट इट इन दिस फॉर्मूला ओनली एंड उसको सॉल्व करके विल गेट टू reach our final answer, right? This was section formula. And now as 1a was there which we derived out of 1, same way 2a is there which we can always derive from 2, right? आप उसको डायरेक्ट याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद करेंगे तो उस समय निकल जाएगा. Basically it is telling me midpoint formula, right? मिड पॉइंट पूरा लिख लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे. मिड पॉइंट फार्मूला बेसिकली वो कह रहे हैं कि अब की बार जो P है
वो ए बी को एग्जैक्टली बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। तब एक्स वाई निकालो, x1 y1 x2 y2, और जो ये p है ये एग्जैक्टली मिड में उसको इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स मिड में यानी कि ये डिस्टेंस AP और PB आर इक्वल, और जब वो इक्वल होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे और मेरा M1:M2 जो आएगा वो 1:1 होगा। सो माई M1 is 1, माई M2 is 1, राइट। सो M1 M2 जब 1 हो गया तब आपका इस P का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो बेसिकली आपको इसी में डालना है और उसका वैल्यू निकालना है। तो उस केस में हमारा x क्या हो जाएगा, हमें पता है M1 1 है, M2 1 है। सो M1 is 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, सीधा x2 ऐसे मल्टीप्लाई करते थे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधा x2 प्लस x1, अगेन M2 is 1 तो सिर्फ x1, और नीचे हमें पता है M1 भी 1 है, M2 भी 1 है, तो नीचे 2 आ जाएगा। गेटिंग इट? सो दिस बिकम्स अ फॉर्मूला इटसेल्फ फॉर मिड पॉइंट। अगर आपको वैसे याद रहेगा तो आप सीधा कर दीजिएगा, आपको कोई पॉइंट देंगे, आप उसका मिड पॉइंट निकालिए, तो आप दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट्स प्लस कीजिए, हाफ कर दीजिए, आ जाएगा। सेम वे y विल बी y2 + y1, बाकी सब m रख रहे हैं, y2 + y1 अपॉन 2। फाइन। सो दीज आर माई मिड पॉइंट फार्मूला। आपको याद होगा तो आप कुछ मत देखिए, सीधा x1 x2 अपॉन 2 कर दीजिए। नहीं याद होता है कोई बात नहीं, आपको सेकंड सेक्शन फार्मूला याद है, दैट्स सफिशिएंट। सेक्शन फार्मूला में वैल्यू डाल दीजिए, आपको पता है मिड पॉइंट है तो M1 M2 को 1 डाल दीजिए, आपका अपने आप निकल के आ जाए। Now let's begin our MCQs, right? Question number 1 is saying the distance of the point 5 minus 4 from x-axis is, what is the point? 5 minus 4, right? And you have to tell the distance of this point from x-axis. So remember what we did? We know distance of any point from x-axis is its y coordinate, that means 4 unit, right, which is B, option B. So 4 unit is the answer. Why so? We have done it in the concept. You can refer to, if you missed it, you can refer to the beginning of this video. I just told you the distance of any point from its x-axis is its y coordinate, and its distance from its y-axis is this x coordinate, right? So this is 4. Next comes question second, which says the distance of the point 3 5 from x-axis, again x-axis. Okay, so obviously 5, which is B again, right? Both are same. From x-axis, distance of 3 5 from x-axis is 5 unit. B and B. Now let's see what's the third question all about. The distance of the point -3 -4 from the origin, -3 and -4 from the origin 0 0. So for that also we have 1a. So we know our formula 1a, which says distance of any point from its origin is x square plus y square. See, आप MCQ में you don't have to write formula. आपको formula पता है, आप रफ में आपको कोई सोल्यूशन भी नहीं देख रहा है, आपके पे एक रफ शीट होगी, उसमें सारे सोल्यूशन कर रहे हैं, नोबडी इज सीइंग द फॉर्मूला, यू विल क्विकली डू। यहीं पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो आप क्विकली यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर आप सीधा 9 लिख दीजिएगा, बिकॉज जितना टाइम बचेगा आपके MCQs करेक्ट होंगे। बट हाँ, इतना फास्ट करना है कि एक्यूरेसी में प्रॉब्लम ना हो, रॉन्ग ना हो। तो अपनी अपनी स्पीड है, आपको अपना पता होना चाहिए किस स्पीड से मैं करूँ कि मैं मिस्टेक्स ना कर रही हूँ, ठीक है। सो अगर आपको कन्फ्यूजन होता है -3 स्क्वायर करके ही कीजिए एंड -4 स्क्वायर, राइट। 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 √25 which is 5. Fine. So distance of
-3 -4 from the origin is 5, which is my C option of question number 3rd. Fine, clear? 1A मैं यहाँ पे फॉर्मूला हमने जो शुरू में किया था 1, 1A, 2, 2A, मैं यहाँ पे आपको मेंशन करते जा रही हूँ ताकि आपको याद आए और रेफ़र कर सके. अगर कोई कन्फ्यूजन हो कि ये कैसे आया है, फॉर्मूला कहाँ से आया, यू कैन रेफ़र टू माई टू द बिगनिंग ऑफ द वीडियो. एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो हमें समझ में आ ही क्या है. नाउ क्वेश्चन नंबर 4th विल डू. फाइंड द वैल्यू ऑफ k. Find the value of k if the distance between A and B is 5 units. Right. हमें बेसिकली एक पॉइंट दिया है A which is k, एक वेरिएबल के साथ है. पूरा एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता है, y कोऑर्डिनेट पता है, x कोऑर्डिनेट नहीं पता, उसको k बोल रहे हैं. और दूसरा एक पॉइंट है B जिसके पॉइंट्स हमें पता है 2 and 3. राइट. अभी हमें k नहीं पता है तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं पूरा निकाल सकते, लेकिन हमें डिस्टेंस दे दिया है 5 यूनिट. राइट. अब जब हमें डिस्टेंस दे दिया है तो हमें राइट हैंड साइड पता है, लेफ्ट हैंड साइड का एक वेरिएबल तो अपने आप निकल जाएगा. अगेन फॉर्मूला फर्स्ट वी आर यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला विच सेज AB विल बी, क्या बोलते हैं, x2. मैं आपके लिए यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ, रिमेंबर आप अपने कॉपी में डायरेक्ट कर सकते हैं. नहीं समझ में आ रहा तब यहाँ समझिए कि कौन सा फॉर्मूला लगा है. डिस्टेंस फॉर्मूला, दिस इज़ फॉर्मूला नंबर 1. मैं यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखते जा रही हूँ. ठीक है. x2 - x1 प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. राइट. सो आप वैल्यूज डाल दीजिए. सो AB विल बी अंडर रूट ऑफ 2 - k whole square plus 3 - 3 whole square, and this AB we know is given as 5. फॉर्मूला इक्वल टू 5 हमें दिया हुआ है. बस इसको सॉल्व करके k निकाल लेते हैं. करिए इसको. ये तो आपको पता है 0 आ गया है, ये 0 आ गया तो ये पोर्शन एलिमिनेट हो गया. हमारे पास आ गया है 2 - k का होल स्क्वायर इक्वल टू 5. अंडर रूट है, होल स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा. 2 - k बाहर आ जाएगा. बट जब भी अंडर रूट से बाहर आता है तो ये प्लस माइनस 2 - k की फॉर्म में आएगा. वी नो, बिकॉज अगर प्लस होगा तब भी होल स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है, माइनस होगा तो दोनों की पॉसिबिलिटी होती है अंदर रहने की. जब बाहर निकालते हैं हम हमेशा प्लस माइनस 2 - k करके करते हैं. दैट मीन्स पहले हम प्लस 2k को सॉल्व कर लेते हैं. अगर प्लस 2k है, 2 - k प्लस वाला ले रहे हैं इज इक्वल टू 5, इक्वल टू 5, देन माई k will become -k will become 5 - 2 and k will become -3. राइट. और -2 - k वाली पॉसिबिलिटी के केस में माई 2 - k will become -5, -k will be -2 - 5 which is -7, and k will be 7. Right. So these both are the answers for question number 4. Let's see options क्या है fourth वाले में. fourth वाले में options are 5, 6, 7, 8. Okay. So out of the question, that means 7 वाला answer will be correct. C. Fine. Either is the option. So 7 is the answer, which is C. Fourth ka C is the answer, and we've done it using the first formula. Now let's see what the fifth question is. Okay, let's do question number 5 now. My question number 5 is saying that if the point A, B are on the circle, okay, this is circle and A, B are on the circle with center O, then find the value of x. Right. That means they're saying this is circle and A and B are any point on the right, and also given AB is given as 4, 3 and xy. A is 4, 3 and B is x and y. Right.
and also the center of the circle is given as 2, 3. Right? So you have to find the value of x. This is x. This is not given, everything else is given, right? So now again we'll use distance formula. I'm writing the formula, right? So again we'll use the distance formula because I know AO is the radius of the circle and OB is also radius of the circle, which will be equal. AO is equal to BO. Right? AO is equal to BO. AO is equal to BO. So दोनों साइड हम और दोनों के एंड पॉइंट्स दिए हैं. We can find out AO, we can find out BO, we'll equate it and we'll get the value of x. तो आप कर लीजिए. AO will be, these are the 2 points. So x2 कुछ भी कर लीजिए, 2 minus 4 whole square, 2 minus 4, 3 minus 3 plus 3 minus 3. x2 minus x1 and y2 minus y1. Say O will be, right, AO will be x2 minus x1, y2 minus y1. Same way BO में x2 minus x1, 2 minus x का whole square plus y2 minus y1, 3 minus 5 का whole square. Right? Now let's find out. इनको equate नीचे कर देंगे. 2 minus 4 is 2, whole square is 4 plus 0. So which is 4 under root of 4, which is 2. Right? क्योंकि वहाँ सब कुछ दिया था. यहाँ पे x है तो यहाँ पे पूरा नहीं solve होगा. 2 minus x का whole square plus 3 minus 5 is minus 2, whole square is 4. Right? Now we know AO is equal to BO, since both are O, which is radius of the circle, right, which is always equal. So AO is 2 and BO is this. So हम unknown जो variable वाला है वो left hand side ले लेंगे. It doesn't make a difference, something is equal, तो आप दोनों side कर सकते हैं. Is equal to 2. This is 2, right? 2 minus x whole square plus 4, ये वाला under root पूरा लिखेंगे इक्वल टू 2. BO इज इक्वल टू AO. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. विल डू होल स्क्वायर बोथ साइड. इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे और इस पूरे का भी स्क्वायर कर देंगे. ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स स्क्वायर कर दिया. विल गेट, कैंसिल हो जाएगा. विल गेट 2 minus x का होल स्क्वायर प्लस 4 is equal to 4. Right? So 2 minus x whole square is equal to 4 minus 4, which is 0. That means 2 minus x is equal to 0 because under root करेंगे तो ये under root of 0 is 0 only. Right? So 2 minus that means minus x equal to minus 2, x equal to 2. Right? Got it? So both sides will get, cancel हो जाएगा. Will get 2 minus x का whole square plus 4 is equal to 4. Right? So 2 minus x whole square is equal to 4 minus 4, which is 0. That means 2 minus x is equal to 0 because under root करेंगे तो ये under root of 0 is 0 only. Right? So 2 minus that means minus x equal to minus 2, x equal to 2. Right? आप यहाँ पे एक चीज़ मिस हो रही है. आप इधर पे प्लस माइनस भी लगा सकते हैं क्योंकि लेकिन इधर 0 आ जाएगा तो उस प्लस माइनस का कोई रेलेवेंस नहीं आएगा. दोनों केस में आपका 2 ही आएगा. सो विल नॉट पुट माइनस, प्लस माइनस का ऑप्शन यहाँ पे. MCQs है, हम एग्जैक्ट आंसर बताना है. अगर आपको सॉल्व करना होता तो आप यहाँ पे एक बार प्लस माइनस अंडर रूट से बाहर आया है तो प्लस माइनस लगा के सॉल्व करेंगे. छोड़ दे, कैंसिल.
So x equal to 2 is the answer, which is option number C here. For question number 5th, C is the answer. Got it? डिस्टेंस फॉर्मूला है, वी नो ए ओ इज इक्वल टू बी ओ, ए ओ निकाल लेंगे, बी ओ निकाल लेंगे, दोनों को इक्वेट कर लेंगे और एक्स की वैल्यू ले आएंगे. एज सिंपल. क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बन रही है, स्क्वायर सीधे ही कैंसिल हो जा रहा है. ठीक है. सो एक्स इक्वल टू 2 इज द आंसर. दैट्स क्वेश्चन नंबर 5th. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6. लेट्स डू इट. So let's do question number 6, which says if points A, B, C and D form a square ABCD, then find the value of P. Okay, so we have ABCD given, which are forming. Question 6, we're given ABCD as vertices of a square A, B, C, D, right? And we have to find out one of the unknown variable of A, which is like A is 5p, so we have to find out the value of p. P is a variable, right? B is 1, 5. All other points are clearly given, 2, 1 and 6, 2. Fine. So now we have to find the value of p. Okay, so now it is a square, so we know all sides of a square are equal, so we can equate AB and AD, because A will be common and we'll have P on both the sides, and we'll find the value of P. That is one way. We'll be using distance formula for AB and equate it to AD using the distance formula. There's another way. Since square is also a parallelogram, is a kind of parallelogram, so we know the diagonals of a parallelogram always bisect each other, right? That means AC is bisecting BD. So O is the midpoint of BD also and AC also. So we have another way. We'll find out the value, the coordinates of O as a using the midpoint formula. Midpoint formula A और C पे लगा के आप coordinates निकाल लीजिए O के. फिर दोबारा B और D पे formula लगा के आप O के midpoints निकाल लीजिए. So since O is the same, आप दोनों को equate कर देंगे. कर लेते हैं, मैं बता देती हूँ. I'm just telling you there are two ways. Either you can use distance formula, AB और AD को equal कर दो, or you use midpoint formula for this. So whenever you have a choice to use distance formula or midpoint formula, always go for the midpoint formula or section formula. Why? Because it is more simpler. Distance में अंडर रूट स्क्वायर होगा तो कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा होगी, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा MCQs में. So whenever there is a choice, go for the section formula. Midpoint is very simple. So we'll find out, since O is the midpoint of AC and BD both, right? O is the midpoint of AC and BD both. Therefore AC से जब हम midpoint formula निकालेंगे तो O के vertex कैसे निकलेंगे? And remember, midpoint formula या section formula आपका x और y के लिए अलग अलग लगता है, और यहाँ पे हमें P निकालना है, which is a y coordinate of A. So we don't need to get into x coordinate. We don't need to find out x coordinate क्योंकि वो सारे given ही हैं. So midpoint का भी सिर्फ y से ही हमारा काम हो जाएगा. So y coordinate of midpoint O, being the center of AC, will be, क्या हो जाएगा आपका y coordinate y2 plus y1 upon 2, 1 plus p upon 2, right? midpoint formula लगा के हमें इसका midpoint का y coordinate मिल गया, which will be equal to BD का midpoint also. तो BD में लिखा देंगे y2 plus y1 2 plus 5 upon 2, 2 plus 5 upon 2, and this both will be equal क्योंकि दोनों O के ही कोऑर्डिनेट्स है. तो इससे P की वैल्यू निकाल दीजिए, 2 2 कैंसिल हो गया. P will be 2 plus 7 minus 1 6, so 6 आ गया. P is equal to 6, which is the C option. Answer C. Answer is C.
गॉट इट। अगर आपने डिस्टेंस लगाया था तो आपको ए बी का फिर डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल के डिस्टेंस निकालते, ए डी का निकालते और इक्वेट करते थे। थोड़ा सा इससे लेंदी पड़ता, तो एमसीक्यूज़ में ये 3 स्टेप बेटर है। आप क्विकली देखेंगे, ये ओ मिड पॉइंट है, इसका भी मिड पॉइंट फॉर्मूला से ओ का वाई कोऑर्डिनेट निकाला इसके थ्रू और इसके थ्रू, दोनों को इक्वेट किया, वी गॉट द वैल्यू ऑफ पी विच इज सी। सो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7. The distance between the point a cos theta plus b sin theta 0. Okay, we are given a point with these coordinates. A cos theta plus b sin theta is the x coordinate of that point and 0 being y. And there's another point O and a sin theta minus b cos theta is. Okay, there are 2 points and we have to find the distance between them. Okay, fine. We'll just make a little space here to do the question properly. Let's do it. Question 7, let's do here. So we have 2 points, a cos theta plus b sin theta and 0. This is one point given and the other point is 0 a sin theta minus 0 a sin theta minus b cos theta, right? So these are the 2 points, say A and B, and we have to find out AB, the distance between the 2 points, right? So fine, we know our formula, we know distance formula x2. We don't need to write the formula in your exam, I'm sure you remember. x2 minus x1 ka whole square plus y2 minus y1 ka whole square. This is our distance formula which will apply here. This is our A, this is our B. So x1 y1 x2 y2, right? So since we have a bigger number, okay, so x2 minus x1, x2 is 0 minus this is x1, a cos theta plus b sin theta, right? This will come in one formula, x1 minus x2 whole square plus y2 minus y1, y2 is this whole, a sin theta minus b cos theta minus 0 equal to square. This is all under square root. Fine. Fine. So let's just solve it. 0 minus, so it will be minus ka whole square is plus, it will become a cos theta plus b sin theta whole square, where we'll use the formula a plus b whole square, plus we have a sin theta minus b cos theta whole square, right? Now let's quickly use the formula. We know a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. So we'll simply start putting the formula, a square cos square theta plus b square sin square theta plus 2ab cos theta sin theta, right? We'll just quickly do it. Plus now we'll use the formula in this, a square sin square theta plus b square cos square theta minus 2ab cos theta sin theta, right? 2ab. So we'll see what it, if anything is getting cancelled. 2ab cos theta sin theta plus and minus 2ab cos theta. So these two terms got cancelled, right?
Then we have a cos square theta, b sin square theta, a square. So a square we can take common. We'll get cos square theta plus sin square theta, right? Same way here also we'll take common b square plus b square. We'll get sin square theta plus cos square theta. Now as we know, sin square theta plus cos square theta or cos square theta plus sin square theta, when the same thing, is equal to 1, right? This we know is equal to 1, right? So obviously this is 1, this is 1, so it comes to a square plus b square, which is the answer for question number 7, which is my D option. D is the answer for question number 7. Right, I'm sure it's simple, just the calculation. We'll put the distance formula, put all the values. We have got 2 whole squares. We'll put the formula and we get under root a square plus b square, which is option D for question number 7. Right, so this was question number 7. Let's do question number 8. Or we can do here also, in fact, yeah. We can do question number 8 here. Question number 8 is saying the perimeter of the triangle formed by the points this is this. Okay, so we'll do question number 8 here. We are given a triangle with vertices as 0 0 2 0 0 2. Okay, this is the origin 0 0 0 0 0 2 0 and 0 2. Okay, 2 0 and 0 2. These are the vertices and we have to find the value, find the perimeter of this triangle. As we know, perimeter is basically length of this plus this plus this will be my perimeter. So we have to find out using the distance formula. We have to find out this length, this length, this length, and we'll add the 3. ओके सो अब देख लो, ये ओरिजिन है 0 0, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस किए थे. ये ओरिजिन है और ये 2 0 है. फाइन. सो ओरिजिन से दिस इज 2 0, दैट मीन्स दिस इज एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स एक्सिस में ही सारे y 0 होते हैं, एंड दिस इज y एक्सिस बिकॉज x 0 है. सो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कैसे होता है, उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो सीधा हो जाता है. दैट मीन्स दिस डिस्टेंस इज 2. इफ यू रिमेंबर वी डिड क्वेश्चन नंबर 1 लाइक दिस ओनली. ओरिजिन से दिस इज y 0, दैट मीन्स एक्स एक्सिस, इट्स ऑन एक्स एक्सिस. सो ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस होता है सिंपल उसका एक्स कोऑर्डिनेट, राइट. सेम वे this is my x is 0, that means it's a y coordinate, y axis, sorry, it's a y axis. So my distance from the origin to this point will be my y coordinate. This is 2. So ये दोनों clear हो गए हैं, 2 and 2. If any confusion, please refer to the little concept we have done in the beginning of this video. You know, we did the summary of the chapter. There only we discussed how we can straight away tell the distance from the origin of the points on x-axis or y-axis, right? So 2 2 we've got. Now left is this distance. So this distance, we'll use the distance formula. Say it is A, it is B, it is C. So A, B, A, C we know. Now B, C we'll find out, right? So B, C के लिए just a second. Let's not get confused by other questions. So क्या कर लेते हैं, बी सी के लिए वी नो आपका एक्स स्क्वायर x2 minus x1, x2 minus x1, 0 minus 2 whole square plus y2 minus y1, 2 minus 0 whole square, right? इसको सॉल्व कर लीजिए. 4 plus 4 which is under root 8, which is 2 under root 2, right? This is come
2, just a second, let me just quickly change my marker. This is 2 under root 2, right? So now this is 2, this is 2, this is 2 under root 2. So my perimeter will be, perimeter of this triangle would be 2 plus 2, which is 4 plus 2 under root 2. So 4 plus 2 under root 2, which is, we'll take 2 common, 2 plus under root 2. Whichever way, let's see which one is there in the option. Question number 8, as you can see, it is 4 plus 2 under root 2. Right, so which is option number D. So question number 8, answer is D. 4 plus, इसको simplify नहीं करा है, आपकी मर्जी है उनके option में. So this is 4 plus 2 under root 2. Is the correct answer, is the perimeter of the triangle given as this. Fine. So question number 8 is done. Let's do question number 9. So now comes question number 9th, which says the center of a circle is O, which is 2a minus 7. Okay, so we have question number 9. It is about a circle where the center is O, which is 2a minus 7. Okay, its coordinates are 2a, it's 2a minus 7, right? The center. And the and if the circle passes through the point A, which is 1, 9, A is any point in the circle which circle is passing through. This is A, which is 1 minus 9, right? So, and has diameter of the length 10 is to, we have the diameter, which is, okay, center is here, is the diameter. Diameter of the circle is given as 10 root 2. Then the value of A is, okay, so we have the center of the circle O, which is 2a minus 7. That means it is in the terms of variable A, and there is another point A on the circle which is given, and the diameter is given. We have to find the value of A, right? Okay, so we know distance from A to O would be my radius. Fine, which is known. How? Diameter is known, half of diameter is radius. Since diameter is 10 is to 10 square root 2, so radius will be half of this, which is 5 root 2. Okay, which will be AO. So we'll solve it and find the value of 2A. A. What is AO? Distance AO is equal to, distance AO is equal to radius of the circle equal to 5 root 2. You don't have to mention all this in your MCQ solution. We'll quickly start doing the solution, which is, so AO distance we'll find out, x2 minus x1, 2a minus 1 whole square plus a minus 7 minus 9 whole square, this is A, right, is equal to 5 root 2. So we'll squaring both sides, because under root हटेगा तभी एक ही वैल्यू निकलेगी. On squaring both sides we'll get, okay, on squaring both sides we'll get this under root will get removed. On squaring this, under root will get removed, this will come out, so it will be 2a minus 1 whole square plus a minus 7 plus 9, right? Minus plus, minus 7 plus 9 would be plus 2 whole square equal to 5 root 2 whole square, right? So 5 root 2 whole square. So it will be, will a minus b whole square formula will use.
So it will be 4a square plus 1 minus 4a plus, again a plus b whole square, a square plus 4 plus 2 to 4a is equal to 5 square is 25, root 2 square is 2. So 25 into 2, 50. Here we can see if anything is getting cancelled, a square square 9, minus 4a plus 4a will get cancelled. So we have 4a square plus, it will be 5a square plus 1 plus 4, 5 equal to 50, right? So it becomes 5a square is equal to 45, a square equal to 45 upon 5, which is 9. So 9, and a square equal to 9, which gives me, we'll just continue it here, a square equal to 9, a is equal to under root 9, which is plus minus 3, which is my option D. So answer of 9th question is D, plus minus 3 under root of 9, right? Nothing we've done. We knew diameter, so we got radius. A is given, O is given, so radius is AO. So we'll simply put distance formula, equate it with the radius given, and we'll find the value of A, which is plus minus 3, option D, right? So that was question number 9th. Let's go ahead and do our next question, question number 10th. Let's do it. So kids, let's do question number 10th. And question number 10 says, if A, B, C be the vertices of triangle ABC, okay, there's a triangle ABC, right, and your ABC coordinates are given, and AD is the median. That means AD is the median, and when we say median, that means it is touching B and C, touching BC at its midpoint, right? That means BD is equal to DC. As we know, median always intersect the base of the triangle at its midpoint, right? It always bisects the base of the triangle. So then the coordinates of D are, okay, we have to find the coordinates of D when A is given as 4, 2, B is 6, 5, and C is 1, 4, right? Okay, so as we can see, we have all the 3 points given, 3 vertices of the triangle ABC are given. We have to find the coordinates of D. Now when we say, since AD is the median, right, from A on BC, that means that BD is equal to DC. BD is equal to DC. Why? Median bisects the side of the triangle. Side of the triangle, right? Median touches it at its midpoint, right? So D is the midpoint of BC. Clear? Since it's given, it's a median, so that means AD will touch BC at its midpoint. So my BD is equal to DC, and from here, that means D, from here we'll find out the value, the coordinates of D. We have the midpoint formula. Remember, section formula was the second formula, and 2A was the midpoint formula, which says, as per that, D, coordinates of D, or say D be xy, right? Say D be xy. Fine. So my points will be, D will be, using the midpoint formula,
we know it is x2 plus x1 upon 2, and same way y will be y2 plus y1 upon 2. Right, please refer to the beginning of the video where we had discussed the formulas, and 2a was a formula for midpoint, and we derived it from section formula only. So I told you, even if you don't remember the midpoint formula but you know the main section formula, you'll be able to do it, because here we know m1 and m2 are 1 1 each, right? So when my m1 m2 would be 1, so obviously m1 plus m2 denominator would be 2 automatically, and in the numerator we have m1 as 1, m2 as 1, same way m1 m2 1 1, so automatically this formula will come out of it, right? Where x would be, my x2 is 1, see this is x1 y1, this is x2 y2. So let's put the values. 1 plus 6 upon 2 is my x, and y is y2, 4 plus 5 upon 2, right? So this gives me 7 by 2, y equal to 9 by 2. Fine. So coordinates of D would be, so xy, that means dxy will be 7 by 2 and 9 2. Fine. And let's see which option is that. Here it is, C, 7 by 2 and 9 by 2. Clear? We have just put the midpoint formula as BC is getting bisected by D, so it's the midpoint. We just put the values in the midpoint formula, and we have got our dxy point. 7 by 2 and 9 by 2. C option is correct. So answer for 10th is C. Correct option for 10th is C. Right? So now let's do next question. Question number 11. So kids, let's do question number 11th. Right? It says if minus 2 minus 1, a0, 4 minus b, and 1 2, 4 points, coordinates of 4 points are given, are the vertices of a parallelogram. Okay, right. So we are given the vertices of a parallelogram. Say parallelogram be AB, CD. Okay, so it's given A minus 2 minus 1, minus 2 minus 1, B A0, C4 minus B, and D as 1 2. No, it's 4 plus B, sorry. It's 4 plus B and 1 2. Right? So minus 2 minus 1, A0, 4B and 1 2 are the vertices of a parallelogram ABCD. Then the values of A and B are okay. That's it. Where two variable coordinates are given, A, x of B and y of C, which are not known. So we have to find out those values. So we'll apply the knowledge of parallelogram. So we know opposite sides of a parallelogram are parallel and equal to each other, right? Opposite sides, AD is parallel to BC and is also equal to BC. Same way AB is equal to CD, right? So we can either do that way, we can equate the sides using the distance formula. We'll find the distance of AB and we'll find the distance of CD. We'll equate it. And since there are two variables, so we might have to find the value of AD and we'll equate it to BC. So one is that we'll have to use the distance formula. Another thing about parallelogram is that diagonal of a parallelogram, two diagonals of a parallelogram always bisect each other, right? Bisect each other means if they're bisecting each other at Y, so O is the midpoint of BD and is also midpoint of AC, right? AC is bisecting BD, that means BO is equal to OD, same way AO is equal to OC. That's another feature of parallelogram. So we can use that too because we have a midpoint formula. From AC we'll find the values of XY
of the midpoint, and also from BD we'll find the value of midpoint and equate both the values. From there also we can get our AB, right? So we can use either of the ways, either by equating the sides or by finding the midpoints of both the diagonal and equating. Personally, I would prefer the latter formula, that is diagonals bisecting each other thing and finding out the midpoint, because midpoint formula, as we know, is a simpler one. We don't have any under root here. It's simply x1 plus x2 upon 2 and y1 plus y2 upon 2, right? So that's a simpler formula as compared to distance formula, which involves under root. So it becomes a little more complicated in computation, right? So if we don't have a choice, it's fine. We can do distance formula also. That too doesn't take too long, but the midpoint formula is even quick. You know, it's quicker than the distance formula. So let's do it through a midpoint formula. So we'll say, as we know, we don't need to write in MCQs when you're doing it in term 1 boards. You don't need to write all the formula, all the feature, like why you're using it. You don't need to mention, but to make things clear to you and not to create any confusion for you, I'm writing everything in detail. There you'll get it in your mind that okay, diagonals bisect, so I will straight away start applying the midpoint formula, right? But here I'm doing in detail for you. So as we know, as the two diagonals of a parallelogram always bisect each other, right? Therefore, O is the midpoint of AC and BD both, right? O is the midpoint of AC, also of BD. So using the midpoint formula, we'll see. So O, where we're saying, is XY. So from AC we can find the value of XY. It's x1 plus x2, which is minus 2 plus 4 upon 2, right? And if you find the Y, y1 plus y2, that is minus 1 plus b upon 2, right? This we have found out from AC. From midpoint of AC formula, we've got this. Also, if we try to find out the midpoint formula or midpoint of BD, we'll see midpoint of BD will be x2 plus x1, 1 plus a upon 2. Same way y2 plus y1, 2 plus 0 upon 2 from midpoint of BD. Okay, this was from AC, this is from BD. So as we know, either you find it from BD or you find it from AC, O is common, so O will be same. दोनों तरफ से same आएगा. That means ये दोनों भी same है, right? दोनों के x coordinate same होंगे, दोनों के y coordinate same होंगे. So this is my first equation, this is my second equation. So from first and second we can see it's not exactly equation but a statement. So from first and second statements we can see minus 2 plus 4 is 2 upon 2. 2 upon 2 is equal to 1 plus a upon 2, right? अब यहाँ से value निकाल लेंगे. So a will become 2 minus 1, that is 1, right? So हमारा a आ गया है 1. इसी तरह y के coordinates भी same होंगे. We'll find out minus 1 plus b upon 2 is equal to 2 upon 2. So b will be equal to 2 plus 1, which is 3. Clear?
कुछ नहीं किया, इसका मिड पॉइंट निकाला, इसका मिड पॉइंट निकाला, क्योंकि ये दोनों को ही बाइसेक्ट कर रहा है, तो इसको बाइसेक्ट करा तो इसका मिड पॉइंट ये आ गया, सेम वे इसी का मिड पॉइंट ये आ गया। बट सिंस है तो एक कॉमन पॉइंट, सो यानी कि ये दोनों कोऑर्डिनेट्स अल्टीमेटली सेम ही आने हैं। सो विल इक्वेट द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ a, विल इक्वेट द y कोऑर्डिनेट्स ऑफ बोथ, विल फाइंड द वैल्यू ऑफ b. So a1 b3, let's see which option is this given. The A option is the answer. For 11th, A is the correct one. 1, 3 are the values of A and B, right? Okay, so let's do question number 12 quickly. So now question number 12. Question number 12 says if P minus 1, 1 is the midpoint of the line segment joining A and B, then B is, okay, I'll read it again more clearly. If P minus 1, 1 is the midpoint of the line segment joining A and B, okay, so this is our question number 12. It is saying this A, this B, and line is joining, and P is the midpoint of AB, which is minus 1 and 1, right? And AB are minus 3 and 1. BA is minus 3B, and B is 1B plus 4, right? So these are the points given. I'll just check it, once again. P is minus 1, 1, A is minus 3B, and B is 1B plus 4, right? So now we have to find value of B. Okay, now we know P is the midpoint of AB. So okay, so we know P is the midpoint of AB, right? That means by using midpoint formula we can find the values of my P, which is already given. That means आपका जो फॉर्मूला होता है, एंड x कोऑर्डिनेट में सब नोन है, -3 हमें पता है, -1 पता है, 1 पता है, सो x कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, उससे कुछ मिलेगा नहीं, हमें b निकालना है विच इज़ इन द y कोऑर्डिनेट. सो विल यूज़ द मिड पॉइंट फार्मूला ऑफ y1 और y2 विच एवर, प्लस में फ़र्क नहीं पड़ता है, अपॉन 2 इज़ y, राइट? सो y2 इज़ b plus 4 plus y1 is b upon 2 is equal to y, which is 1, right? So from here we'll find, इसको open कर लेंगे, 2b plus 4 upon 2 is equal to 1, which will give me, ये ऊपर आ जाएगा 2 minus 4 upon 2 will give me minus 2 upon 2, which is 1. So b is minus 1, right? B is minus 1, which is B. 12 का correct answer is, our option is B, right? How come? Midpoint दिया हुआ था और B में ही, Y में ही coordinates है B, तो हम Y वाला ही formula सिर्फ लगा रहे हैं, X में सब कुछ known है. So y2 plus y1 upon 2 is Y is the midpoint. Midpoint already हमें पता है y1 है, so उसको 1 डाल देंगे, y2 y1 B plus 4 है, B है, वो डाल दिया, इक्वल टू 1, सॉल्व कर दिया, b इक्वल टू -1 आ गया, राइट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 13. इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट, सी अभी तक आप देख रहे हैं सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, ये ही घूम रहा है, डिस्टेंस मिड पॉइंट सेक्शन, डिस्टेंस मिड पॉइंट सेक्शन या ओरिजिन, और कोई फॉर्मूला नहीं है इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक है? सो 13 इज इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट 3, 4 divides the line segment joining the points A and B. Okay, so इसमें दिया हुआ है एक पॉइंट P है जो कि AB को कहीं पे टच कर रहा है, वो हमें बताना है कि वो AB को डिवाइड कर रहा है बेसिकली 2 पार्ट्स में, तो दे आस्किंग कि वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है. वी हैव टू फाइंड आउट M1 रेशियो M2 और M1 अपॉन M2, राइट? ए और बी दिए हैं 1, 2, 6, 7, 1, 2, 6, 7 और P is 3, 4.
So using section formula, we'll find out x is given as 3. So we'll see m1 into 6, m1 into x2 plus m2 into x1, which is 1, right, upon m1 plus m2 is equal to x, which is 3, p ka point 3, right? Since we need the ratio, so I think one equation only will be able to help us. So it is 6m1 plus m2 is equal to 3m1 plus 3m2, right? So now we'll take 6m1 and minus 3m1 will come here. 6m1 minus 3m1 is equal to 3m2 minus m2, right? So this will give me 3m1 is equal to 2m2, fine. And as we need the ratio, I'll just quickly write something here. We know 3m1 is equal to 2m2, so if we need the ratio, we need m1 upon m2. So m2 will come down, 3 will go there, it will be 2 upon 3. So the ratio m1 is to m2 is 2:3, right? So this is the answer, 2:3. m1 m2 नीचे आ गया, 3 उधर चला गया, 2:3, right? So do we have the answer? Right, B. Question 13, B is the answer. 2:3 is the ratio in which P is dividing AB. So this is what the question was all about. Now let's do the next question, which is 14th question. Do our 14th question, right? So it is saying the coordinates of the midpoint of the line segment joining this and this is 410. Okay, so they have given the coordinates of the midpoints of AB also. सब कुछ ही दे दिया है, that means कोई ना कोई coordinate missing होगा, उसकी value निकालनी होगी. So AB is 8 minus 8 13 and B is x7, right? So x is the trump card, their trump card. Okay, is 410. Midpoint आपका यहाँ पे है इसका से P, which is 410. So you have to find the value of x. Okay, अभी हमने कुछ क्वेश्चन किए हैं उस टाइप के. So हमें जिसका निकालना है उसी का ही फॉर्मूला लगाएंगे. y वाले फॉर्मूले में सब कुछ नोन है, y1 भी, y2 भी और y भी, सो उसमें नहीं जाएंगे. सो हम मिड पॉइंट फार्मूला लगाएंगे. मिड पॉइंट फार्मूला हमें पता है x1 प्लस x2 और x2 प्लस x1, इट्स वन द सेम थिंग, इट्स इक्वल टू 2. ठीक है, सो आपके यहाँ पे लगा ले दिस इज द x थिंग, और हमें y का सब पता है, हम वहाँ कुछ नहीं करेंगे. तो y2 इज़ x plus y1 is minus 8, sorry, x2 is x, x1 is minus 8, sorry, y तो हमें टच ही नहीं करना है. x2 is this, x1 is minus 8 upon 2 and this is equal to 4. मिड पॉइंट ऑलरेडी दिया हुआ है, तो अब सीधा x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से निकाल लीजिए यहाँ से. सो दिस विल गिव अस x इक्वल टू 2 इंटू 4 8, और ये माइनस 8 उधर चला जाएगा, प्लस 8. सो x इक्वल टू 16. फाइन, कुछ नहीं है, हमें मिड पॉइंट दिया हुआ था, एक मिसिंग था तो मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले में डाल दिया. सिर्फ x ही अननोन है, बाकी सब नोन है. सॉल्व कर लिया, 2 ऊपर चला गया, प्लस माइनस 8 उधर चला गया, 16. सो 14th का A इज़ द आंसर फॉर 14th. Fine. As I said, few questions are very quick and others will take little extra time, so it will balance. They will give it like that. Some quick questions, some little lengthy questions. So not to worry. Now 15th question. The ratio in which the x-axis divides the line segment joining AB is, okay, अभी रेशो वाला पहले भी किया था हमने, और अब की बार हमें x-axis से there is a point AB which is given as 3, 6 and 12 minus 3. 3, 6 and 12 minus 3.
and it is being divided. 15 says the ratio in which the x-axis divides the line segment joining A and B is, okay, so this time my x-axis is dividing AB. That means this is my x-axis, this is my y-axis, and this x-axis somewhere we have A and B, right? A is given as 3, 6, and B is given as 12 minus 3. Okay, 12 minus 3. So, and AB here, AB is joining AB, and x-axis is dividing it, as you can see, right? So you have to find in what ratio are they dividing the line AB. M1 is to M2 we have to find. So we know, अब जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन किया था M1 M2 निकालने के लिए हमें बीच का पॉइंट भी चाहिए होता है. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं सिंस क्लू गिवन है x axis is dividing, so we know for all the points on x axis my y is always 0 and x can be anything, right? So remember this, whenever they're talking about x axis or y axis, so x axis काट रही है यानी कि सारे पॉइंट्स x axis का कोई एक पॉइंट काट रहा है इसको, तो x axis पे जो भी पॉइंट होता है उसका y हमेशा 0 होता है, बिकॉज वो x axis पे तो ऊपर गया ही नहीं, राइट? सेम वे अगर पॉइंट y axis पे होंगे तो उसके x कोऑर्डिनेट सारे 0 होते हैं, राइट? सो यहाँ पे सिंस x एक्सिस कट कर रही है इसका मतलब उसका y कोऑर्डिनेट हमें पता है 0 है फॉर श्योर. x कुछ भी हो सकता है, और हमें m1 m2 निकालने के लिए, रेशियो निकालने के लिए m1 अपॉन m2 हमें एक ही काफ़ी है, एक फॉर्मूले से ही निकल जाता है, हमने पहले भी क्वेश्चंस करे हैं, राइट? सो आप यहाँ निकाल लीजिए. हमें y के सब दिया है, y1 y2 एंड y, राइट? सो विल यूज़ द सेक्शन फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y, राइट? अब इसमें वैल्यूज़ डाल दीजिए. m1 हमें नहीं पता है, y2 हमें पता है -3 प्लस m2 y1 is 6, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू y is 0, राइट? इसको सॉल्व कर लेंगे. सॉल्व बहुत ईजी है, ये ऊपर जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा. सो -3m2 प्लस 6m, I'm sorry this is 1 m1 ठीक है. सो एक m1 m2 हुआ और सारा क्वेश्चन रॉन्ग, फाइन. सो m1 y2 सो 3m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू 0. ये इधर चला गया, 0 हो गया. सो दिस विल गिव मी -3m1 इज इक्वल टू -6m2. सो हमें तो m1 m2 चाहिए, रेशियो m1 अपॉन m2 चाहिए क्योंकि रेशियो चाहिए. दिस विल m2 नीचे आ गया और 6 के नीचे 3 चला गया, राइट? 2/1. दैट मीन्स माई m1 is to m2. m1 by m2 रेशियो क्या है? 2:1, राइट? m1 m2 आ गया है 2:1. ईजी है, याद रखिए जब भी m1 m2 चाहिए एक ही चाहिए, फॉर्मूला एक ही से निकल जाता है, दूसरे की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है. तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ डाल दिए. x एक्सिस था तो y 0 होगा, y एक्सिस होगा तो x 0 होगा, ऑलवेज रिमेंबर. वैल्यूज़ डाल के सॉल्व कर लिया, m1 अपॉन m2 आ गया 2:1 विच इज़ a. सो 15th का आंसर इज a, राइट? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 16. Let's see how big is the question, if we'll be able to do it here or we'll make more space for it, right? So 16th question, what is it saying? Question number 16 is saying the coordinates of the fourth vertex C of a rectangle ABCD formed by the points this. Okay, आपको A, B, D दिया है, C नहीं दिया है, C निकालना है. Okay, easy. Fine, we'll do it there because ठीक है, maybe we'll fall short of space, so let's make some space for question number
16th. I think 14, 15th are clear. See, I'm doing all the questions in as much detail as possible so that you are able to understand it. Still, if you get stuck somewhere, if you don't understand any particular point that I've told you, please do write a comment to me so that I'll reply you and help you clear that doubt, right? Otherwise, I won't get to know unless you tell me. So please let me know. Yeah, so let's continue with question number 16. We read like it was coordinates of fourth vertex we have to find, where it's a rectangle ABCD. Right, A, B, C, D. Given as 0, 0, 2, 0, 0, 3. 0, 0, 2, 0, 0, 3, right? 0, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 0, 2, 0, 0, 3 and C का vertex नहीं पता हमें. Let it be X and Y, right? Now we are given as it's a rectangle. Now we have to find the values of vertex of X, Y we have to find, right? So we know हमने parallelogram का भी एक पढ़ा था. Rectangle is a parallelogram only, right? Rectangle is a kind of parallelogram where we have 90 degrees, sides on the 90 degrees, right? So we know parallelogram, again parallel, जब भी rectangle parallelogram का कोई भी question आएगा, so keep it in your mind, it's a trick that you will be using the midpoint formula. You don't, maybe the first thing strikes is sides are equal, so you'll start equating the sides, which is also fine, you'll be able to do it, but it's a little lengthier process. So rather try the midpoint formula as diagonals of a parallelogram, of any parallelogram, be it a rectangle or not. Maybe it's not looking as bisecting because I've drawn it little casually, but otherwise diagonals of a rectangle I'll try to make it, but don't go to the diagram because here we are doing the solution. Actually diagram मैं थोड़ा carelessly बना रही हूँ. Okay, so diagonal of a parallelogram or rectangle will always bisect each other. That means this is the midpoint of this and this is the midpoint of this. That means midpoint of AC will be equal to midpoint of BD, right? Midpoint of AC will be equal to midpoint of BD. So midpoint formula से हम लिख लेंगे AC के midpoints क्या निकलेंगे? AC के midpoints x2 which is x plus x1 upon 2, right? ये आपके x, हम x axis दोनों के x जो मिड पॉइंट्स है वो xy आएंगे, तो हम x कोऑर्डिनेट्स इक्वेट कर देंगे, y कोऑर्डिनेट्स इक्वेट कर देंगे. या फिर इसको थोड़ा सा और क्लियर करने के लिए बताती हूँ. मिड पॉइंट्स निकाल लेते हैं AC से. सेम वे y प्लस 0 अपॉन 2, राइट? दिस विल बी इक्वल टू यहाँ का मिड पॉइंट विच इज़ फर्स्ट x 0 plus 2 upon 2 and y का आ जाएगा 3 plus 0 upon 2. 3 plus 0 upon 2, right? So these points are equal. That means exactly x equal है, y equal है, तो हमें equations मिल जाएंगी. x plus 0 upon 2 is equal to 0 plus 2 upon 2. ये दोनों मैंने exactly equate कर दिया, अभी 0 भी solve नहीं किया है, so that कोई confusion ना हो. So x upon 2 is equal to 2 upon 2, which gives me x equal to 2, right? Same way y वाले को equate कर लीजिए. y plus 0 upon 2 is equal to 3 plus 0 upon 2, which will give me y 3 upon 2 into 2. ये 2 ऊपर चला गया, which will give me y equal to 3. So x and y points आ गए 2 and 3, which is C option. Question number 16, third is the option 2 and 3 are the points,
right? So always remember, be it a rectangle or any other parallelogram, for all the parallelogram we'll use the midpoint formula. Diagonals always bisect each other. सो बाइसेक्ट करते हैं तो मिड पॉइंट सेम हो जाएंगे. यहाँ लिख लीजिए अगर कभी आपको कन्फ्यूजन हो. और डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल विच इज़ अ पैरेललोग्राम ओनली बाइसेक्ट बाइसेक्स. ठीक है, डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल बाइसेक्स. सो दैट मीन्स मिड पॉइंट ऑफ ए सी इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी. पॉइंट्स निकाल लिए, एक्स एक्स सेम होंगे, वाई वाई सेम होंगे, वैल्यूज आ गई, राइट. सो हेयर गोज नाउ माई क्वेश्चन 17, here goes 16. Now we'll do 17th, which says the coordinates of the point dividing the join of the points 5, 0 and 0, 4 in the ratio 2:3 internally are, okay, it's a straight section formula. They're saying coordinates of the point which is dividing the join of the points 5, 0, suppose A है 5, 0, B है 0, 4 और जो P है उनको P पॉइंट है 2:3 में डिवाइड कर रहा है. सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, राइट. सो वी नो इट्स अ स्ट्रेट सेक्शन फॉर्मूला. आपका x कैसे आएगा, m1 x2 2 into 0. मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, फॉर्मूला आप रेफ़र कर लीजिए. बार बार मैं हर क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, बोल ज़रूर दूँगी. m1 x2 प्लस m2 x1 3 into 5 अपॉन m1 प्लस m2, राइट. तो ये सॉल्व करके मेरे को x मिल जाएगा. y कैसे आएगा, m1 y2 2 into 4 m2 y1 3 into 0 upon m1 plus m2. स्ट्रेट सेक्शन फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, कर लीजिए. 2 0 0, दिस इज़ 0, दिस इज़ 15. सो ऊपर आ गया 15 and 2 plus 3 5. सो दिस गिव्स मी 3, राइट. 2 into 4 8 plus 3 into 0 0. So 8 upon 5, which will be 8/5 only, right. So A option 3 and 8/5 is the answer for question number 17. First question 17th. Let's march on to question number 18th. I hope things are much clearer to you now and you are confident upon coordinate geometry, right. So don't worry, it's easy and we're not going to let at least 6.6 marks of coordinate geometry anywhere. वो कहीं नहीं जाने वाले. और ऐसे करते करते हर क्वेश्चन को पैक करते जाइए और all your points are in the pocket, right. So क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं, चलिए. और अगर थक गए हैं तो एक ब्रेक ले लीजिए, क्विकली पॉज कीजिए, go have some tea, coffee, snacks and then come back and continue with the video. Question number 18 is there, which is saying the line 3x plus y minus 6 equal to 0 divides the line segment joining A and B in the ratio, okay, this time point is not given but equation of the line is given. That means x and y का relationship दे दिया है but x and y नहीं दिया है, and then we have to find the ratio in which that point, that line is dividing AB. That means, so this is IT, that means I have A, B as 1 minus 1, 3, 6, 1 minus 1, 3, 6, and I have a line with the equation 3x plus y, 3x plus y equal to, sorry, minus 6 equal to 0, right. So this line, that means all the points on this line is satisfying this equation and so is P also satisfying this equation, right. 3x plus y minus 6 equal to 0. Now we have to find the ratio m1 m2 in which this P point which is falling on this line is dividing AB, right. Little tricky because अभी तक हमें यहाँ point दिया होता था
तो हम निकाल लेते थे। अभी बेसिकली पॉइंट एक्स वाई नहीं दिया है, बट एक्स वाई के बीच में रिलेशनशिप दे दिया है, बिकॉज इस लाइन में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इस फाइन। लिटिल ट्रिकी व्हेन यू सी इट एट वंस फर्स्ट टाइम, थोड़ा सा सोचते हैं तो समझ में आ जाता है। इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, सो डज P will satisfy this equation. Okay, and now we have to find the ratio. That P is dividing AB in M1 is to M2. ठीक है, M1 M2 में डिवाइड कर रहा है। सो P को XY ले लिया है हमने, सो M1 M2 में डिवाइड कर रहा है, AB है हमारे पास, तो हम XY कैसे निकालेंगे? सो X विल बी इक्वल टू M1 X2, दैट मीन्स 3M1 M2 X1, दैट मीन्स प्लस 1M2 अपॉन M1 प्लस M2, राइट। सो 3M1 प्लस M2 M1 प्लस M2, ये मेरा x आ गया। सेम वे y आ जाएगा, M1 6M1 प्लस -1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। एंड पॉइंट्स तो दिए हैं, तो M1 M2 की फॉर्म में तो x y ला ही सकते हैं। सो 6M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2, राइट। हमारे पास x और y आ गए हैं। अब हमारे पास एक्स वाई की इक्वेशन भी है, दैट मीन्स सारे पॉइंट्स उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, पी भी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि ये वाले पॉइंट्स भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इन एक्स वाई को इस इक्वेशन में डाल देंगे। सो एज वी नो 3x प्लस वाई माइनस 6, लेट्स जस्ट रीचेक द इक्वेशन, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए फिर पूरा रॉन्ग हो जाएगा। 3x प्लस वाई माइनस 6 फाइन इज इक्वल टू 0। Therefore 3x की जगह हम डाल देंगे 3M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस y की जगह डाल देंगे 6M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 माइनस 6 इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं। सो लेट्स सॉल्व इट। सी M1 M2 जो डिनोमिनेटर है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा है। सो लेट्स एलिमिनेट दिस M1 प्लस M2। सो लेट्स मल्टीप्लाई द होल इक्वेशन बाय M1 प्लस M2, राइट। यहाँ पे लिख दो अगर आप भूल जाए तो। मल्टीप्लाइंग, केवल सिंपल बनाने की कोशिश करें क्योंकि ज़ीरो है ना, तो कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो M1 प्लस M2 डिनोमिनेटर से हट जाएगा, यहाँ से भी और यहाँ से भी, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे विल कम 9M1 प्लस 3M2। समझ रहे हैं, M1 प्लस M2 नीचे डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया तो इस टर्म से M1 प्लस M2 कैंसिल हो गया, और ये आ गया 9M1 प्लस 3M2 प्लस यहाँ पे अगेन M1 प्लस M2 पूरा एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 6M1 माइनस M2 माइनस, और यहाँ पे M1 प्लस M2 कोई कैंसिल नहीं होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -6 इंटू M1 प्लस M2 विच विल गिव मी -6M1 माइनस 6M2 इक्वल टू 0 इंटू M1 प्लस M2 विल गिव मी नथिंग बट 0 ओनली, राइट। अब यहाँ पे M1 एक साथ कर लेते हैं, प्लस 6M1 माइनस 6M1 विल गेट कैंसिल, सो M1 में सिर्फ बचता है 9M1। M2 वाले देखिए 3M2 माइनस M2 माइनस 6M2, तो सॉल्व कर लीजिए। 3 माइनस 1 इज़ 2 माइनस 6 इज़ -4, 3 माइनस 1 इज़ 2 एंड 2 माइनस 6 इज़ -4, -4 M2 है, उधर ले जाएंगे +4 M2 हो जाएगा, राइट। सो M1 के नीचे M2 ले आएंगे, M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू 4 और 9 उधर चला जाएगा 9, राइट। तो मेरे पास M1 अपॉन M2 4 अपॉन 9 आ गया है, यानी कि M1 M2 का रेशियो होता है 4:9।
m1/m2 4/9, दैट मीन्स रेशो क्या हो गया है 4:9, विच इज़ लाइक बी पार्ट, बी ऑप्शन इज द आंसर. गॉट इट? 18th का B is the option. 4:9 is the ratio in which my line is dividing AB in m1/m2 ratio. Line is dividing 3x plus y minus 6 equal to 0. Line is dividing AB in 4:9 ratio. ठीक है, आप समझ लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है. कुछ नहीं किया हमने, सिंपल हमें पता है डिवाइड करते हैं तो सेक्शन फार्मूला लगता है. m1 और m2 हमें पता है, m1 m2 हमें पता करना है, तो हमने उसको एज्यूम कर लिया m1 m2 ही, राइट. सो m1 m2 की टर्म्स में हम इस पॉइंट को ले आएंगे बिकॉज एंड पॉइंट्स हमें पता है. सो सेक्शन फार्मूला लगा के x और y आ गया m1 m2 की टर्म में, और xy का हमें एक इक्वेशन भी पता है. सो इस xy को हम उस इक्वेशन में डाल देंगे, सॉल्व करेंगे सिंप्लीफाई करके, m1 प्लस m2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, एंड विल गेट m1/m2 एज 4:9, राइट. सो हेयर इज योर क्वेश्चन नंबर 18. You can take a screenshot or note it down, and let's then now go to question number 19th. And the coordinates of its center are -2, 5. Okay, this is a circle and there's a diameter which obviously passes through its center. So one end of this diameter is A, which is given as 2, 3, and the coordinates of its center is -2, 5. ये भी दिया हुआ है -2, 5. Then the coordinates of its other end of the diameter, B के coordinates निकालने हैं, say it be x, y. Okay, so आपको normally end दिया होता था, पिच का निकालना होता था, अब की बार end पिच का पॉइंट दिया, and we know this is the midpoint because center of a circle is always the center of its diameter also. ये रेडियस r है, ये भी रेडियस r है, this is r which is equal, right. So O is the midpoint of A B, right. So midpoint formula क्या होता है हमारा, x2 which is this, in this case it is x, plus x1 which is 2/2 is equal to, ये x को मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आता है x2 plus x1/2 इक्वल टू मिड पॉइंट वाला, दैट इज -2 गिवन है हमें, राइट. सो यहाँ से हमें x मिल जाएगा. सेम वे y का हमें दिया हुआ है, y का मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है y2 इज हेयर y प्लस y1 विच इज़ 3/2 इज इक्वल टू, जो मिड पॉइंट होता है वो आ जाता है जो कि हमें दिया है 5. सो विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y. b की वैल्यूज आ जाएगी, x इक्वल टू x प्लस 2 इज इक्वल टू -4 एंड x इक्वल टू -6, राइट. -4 and -2 that is -6. y will be equal to 2, 5, 10 and -3, that is 7. y equal to 7. So my B, the other end point, right. So that was 19th. Now let's see what 20th question is saying. 20th is saying, if the midpoint of the line segment joining A and B, we have A and we have B, 29, 4, okay, it's sorry, 2A, it's not 28, 2A4 and 2 - 2 3B. Okay, A और B की फॉर्म में है, 2A and 4 and here we have -2 3B, and the midpoint of the line segment joining this is M, which is 1 2A plus 1.
ओके फाइन, मिड पॉइंट दिया है पर ए बी की टर्म में, एक ही टर्म में, और एंड पॉइंट्स भी दिए और ए की बी की टर्म में. देन वैल्यूज ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आर, वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. ओके, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला हमें पता है, एक एक्स का होता है एक वाई का होता है. तो पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ देख रहे हैं ए में एक्स में x1 में a है, x2 सब कुछ पता है, x भी सब कुछ पता है. तो यहाँ से x के फॉर्मूले से हम a निकाल लेंगे, और फिर जब हम y में जाएंगे तो y1 पता है, y2 b में है और y a में है. क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा तो हम उसको इधर डाल देंगे, यहाँ b आ जाएगा. क्लियर? इफ़ नॉट लेट्स जस्ट सी व्हाट आई एम डूइंग. हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला पता है तो हम मिड पॉइंट फार्मूला डाल देंगे. वी नो x2, हम x से क्यों शुरू हो रहे हैं, क्योंकि x पता है, x2 पता है, सिर्फ x1 में एक अननोन है. तो x2 + x1 अपॉन 2 इज़ x. ये मिड पॉइंट फार्मूला है, राइट. तो इसमें वैल्यूज़ डाल दीजिए. x2 इज़ -2 प्लस x1 इज़ 2a अपॉन 2 एंड दिस इज़ इक्वल टू मिड पॉइंट x कोऑर्डिनेट विच इज़ 1, राइट. तो यहाँ से हम वैल्यू ले आएंगे -2a + 2a, -2 + 2a अपॉन 2 इक्वल टू 1. सो दिस विल गिव मी 2a इज़ इक्वल टू 2 × 1 2, और ये -2 उधर चला जाएगा, +2 4. सो a इज़ इक्वल टू 4 अपॉन 2. ए आपका आ गया 2, राइट. अब हम एक बार अपने ऑप्शंस देखेंगे. ए इक्वल टू 2 आ गया है, बट ए और बी दोनों में 2 आपका एक्स करेक्ट है, राइट. अब हम एक बार अपने ऑप्शंस देखेंगे. ए इक्वल टू 2 आ गया है, बट ए और बी दोनों में 2 आपका एक्स करेक्ट है. जो फर्स्ट ए की वैल्यू है 2, वो ए और बी ऑप्शन दोनों में है. सो अभी हम नहीं टिक कर पाएंगे, हमें सेकंड को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, बी को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा. ए और बी में डिसाइड नहीं कर पाएंगे. कई बार होता है सिर्फ एक में हमारा करेक्ट आंसर आता है, एक से ही हमें फटाफट पता चल जाता है. पर यहाँ पे ए और बी दोनों में 2 है, सो बी को करेक्ट करना पड़ेगा कि वो 2 है कि 3 है, राइट. सो लेट्स सी. अभी हमारा ए आ गया. अब हम मिड पॉइंट फार्मूला डालेंगे बी का. y2 + y1 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू y. मिड पॉइंट फार्मूला डालेंगे y का b निकालने के लिए, ठीक है. सो y2 इज़ 3b प्लस y1 इज़ 4 अपॉन 2 एंड y इज़ 2a + 1. 2a + 1. a हमें पता है 2 है, तो ये आ जाएगा 3b + 4 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 2 × 2 + 1. ये वाला ये इधर डाल देंगे. अब इसको सॉल्व कर लीजिए. 3b इज़ इक्वल टू 2 2 = 4 + 1 5 और 2 ऊपर इंटू हो जाएगा. दिस 2 विल गो देयर, ठीक है. 2 + 2 4 + 1 5 5 × 2 10 और ये -4 उधर चला जाएगा. दिस विल बी 6. सो b विल बी 6/3 विच इज़ 2. So A2, B2, that means A, right? So आपका A is the correct option, answer. A2, B2, A. Oh, sorry, this one. A2, 2. Right. So kids, friends, rather. बड़े बच्चे हैं भैया. Okay. Just kidding. Friends, we are done with 20 questions for now, part 1. We have done the summary of the chapter and we have done basic 20 questions so that at least we can attempt any question on coordinate geometry now. If we practice more, we'll become more proficient, we'll be more faster in our. So follow me and do the questions with me, practice these questions, and anywhere you find a problem, you get stuck and you don't understand any concept, let me know in the comment box, right? Do write me a comment
And so happy practicing. Exam is just around the corner, 30th November. It's starting. So all the very best. Stay happy, sleep well, eat well, and practice well, right? See you in the next video, part 2. And if you like my video, please let your friends also know and practice together, and just give me a thumbs up, right? Bye bye. Take care.